हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज द एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल में भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन is called intermolecular force. So our topic is intermolecular force. Intermolecular force. Intermolecular force. So the force of attraction, the force of attraction between the particles, is called intermolecular force. Intermolecular force. The intermolecular forces was first studied by van der Waal. So on the name of van der Waal, in the honor of van der Waal, we call it van der Waals forces. Van der Waal forces. There are three forces in van der Waal forces. The first one is dipole forces. Dipole forces. Okay. The first one is dipole forces. Second one is induced dipole forces. Second one is dipole induced dipole forces. Dipole induced dipole forces. And the third force of van der Waal force is dispersion force or London force. Dispersion force or London force. Dispersion force or London force. So in van der Waal forces we have three type of forces. The first one is dipole force, second one is dipole induced dipole force, and the third one is dispersion force or London force. Let us discuss about the dipole force. So the first topic is dipole force. So we can conclude that van der Waal forces in three type of forces. The first one is dipole force, the second dipole induced dipole force, and the third one is dispersion force or London force. We will discuss about the first force, dipole force. Dipole force. So the force of attraction between two dipoles. The force of attraction between two dipoles. The force of attraction between two dipoles is called dipole force. For example, the force of attraction between SO2 molecule, the force of attraction between HCl molecule. ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बीच में लगना है. तो इस केस में हमने कहा कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा कि दो अलग अलग डाइपोल के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको हमने नाम दे दिया है dipole forces. For example, the force of attraction in SO2 molecule, the force of attraction in HCl molecule, etc. Here dipole force act. All right. So let us consider an example HCl. In HCl, the structure is H single bond Cl. Here the chlorine is more electronegative than hydrogen. In that case, the shared pair electron will shift towards chlorine. And chlorine acquire partial negative charge. Hydrogen acquire partial positive charge. Chlorine acquire partial negative charge and hydrogen acquire partial
positive charge. Let us take another molecule of HCl. H single bond Cl. Here chlorine require partial negative charge, hydrogen require partial positive charge. In HCl, hydrogen is partial positive, chlorine is partial negative. That is the one end is partial positive, other end is partial negative. So it can be treated as a dipole. It can be treated as a dipole. It is a dipole. Here is another dipole. HCl. Another dipole. Another dipole. Okay. Negative end and positive end, when come close to each other, a small force of attraction between these ends appear, and this force of attraction is called dipole-dipole attraction. Dipole-dipole attraction. Here, the dipole-dipole force is also called Kisson forces. Kisson forces. Dipole-dipole forces are also called Kisson forces. Here we can say that the force is inversely proportional to 1 upon distance to the power 6. 1 upon distance to the power 6. So let us ask the question. Let me ask the question. What happened when the distance between two particles or two dipole decreased by half? What happened? That is the what will be the force when the separation between the two dipole is half? अगर दो डाइपोल्स के बीच का सेपरेशन हमने हाफ किया है तो फोर्स हमारा क्या होगा? ओके, उनके बीच में अब नया फोर्स क्या होगा? तो हमने कहा कि F proportional to 1 upon r की पावर 6, 1 upon r की पावर 6, F proportional to 1 by r की पावर 6, r raised to power 6. If the distance is half, that is r will be replaced by r by 2. So we can write, let me write the question. What happened when the separation between the particles is decreased by half? What will be the force between two dipoles when the separation is half of initial separation. When the separation is half of initial separation. So initially F proportional to inversely proportional to 6 power of distance between the particles. So F proportional to 1 by r raised to power 6. If the separation is half, this means r is equal to r by 2. R is equal to r by 2. So F proportional again proportionality constant लिखते हैं. Let us write a proportionality constant in place of proportional. So F is equal to K r raised 1 by r raised to power 6. If the distance is half, then we can write F is equal to K. This was the force when the separation of r. If the separation is r by 2, so K 1 upon r by 2 raised to power 6. R by 2 raised to power 6. So we can write r by 2 1 upon r by 2 raised to power 6. That is 2 raised to power 6. So F is equal to K by r to the power 6 into 2 to the power 6. 2 to the power 6. That is if the new force is F dash. New force is F dash. We will solve here. F dash is equal to 64 times of K by r raised to power 6 from 2. Since K by r raised to power 6, new force is this. K by r raised to power 6 is F. K by r raised to power 6 is F. So we can write F dash is equal to 64 times of initial force.
the resultant force will be 64 times stronger than the initial force. Alright, so this is the impact of separation between the particles. Impact of separation between the particles. Now let us discuss about the second force. The second force is dipole induced dipole force. Dipole induced dipole force, or second force is dipole induced dipole force. Dipole, it is very easy force. It is very easy to discuss dipole induced dipole force. Induced dipole force, we can define as the force of attraction between the dipole and the induced dipole. Dipole and the induced dipole is called dipole induced dipole force. The force of attraction between dipole and induced dipole. Dipole and induced dipole is called dipole induced dipole force. Dipole induced dipole force. Dipole induced dipole force. For example, let us take a dipole. Here is the dipole, that is the positive charge and the negative charge. Here is the dipole, that is one in carry positive charge and other in carry negative charge. So let us consider a neutral molecule which is placed near to a dipole. Neutral molecule, neutral atom which is placed near to a dipole. If it is a neutral atom, outside is electron cloud. The electron cloud has negative charge, electrons have negative charge, and here is the positive charge. So after some time, the shape of molecule get deformed. The shape of molecule get deformed. This is the deformation in shape. This is the deformation in shape. So after the deformation, the electrons will collect to one end and nucleus will be a other end. Here is the here are electrons, that is negative charge, and here is nucleus, that is positive charge. So neutral molecule in effect of dipole get converted into dipole, and this is called induced dipole. This is called induced dipole. The force of attraction between this dipole and induced dipole is called dipole induced dipole force. Now what is induced dipole? This part we have to study induced dipole. What is induced dipole? When a neutral atom comes close to a dipole, it gets converted, that is the neutral atom get converted into dipole. The neutral atom gets converted into dipole. In the effect of a dipole, a neutral atom get converted into dipole. Alright? And the dipole thus formed is called induced dipole. The dipole thus formed is called induced dipole. So, dipole and induced dipole. The force of attraction between the dipole and induced dipole is called dipole induced dipole forces. We have to discuss the third force, ion dipole forces. Ion dipole forces. The third force is ion dipole force. We have to discuss one dispersion force or London force. Then we will discuss ion dipole force. Now we are going to discuss dispersion force or London force. After that we will discuss hydrogen bonding and ion dipole forces. So the third force is dispersion force or London force. Dispersion force or London force. On the name of Fritz London, this force is called dispersion force or London force. In the honor of Fritz London. So dispersion force or London force. Let us consider an atom. According to Sommerfeld model, atom is elliptical in shape.
at one foci nucleus exists, and on in elliptical path electron moves around the nucleus. Electron moves around the nucleus. Here is atom 1. Atom 1. Now atom 2. According to Sommerfeld model, the atom is elliptical in shape, where nuclei exist one of the foci. Nuclei exist one of its foci. One of its foci. Electron moves on an elliptical path. Electron moves on an elliptical path. So, सोमरफेल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकल शेप का होगा, जिसके एक फोकाई पे अपना एटम एग्जिस्ट करेगा, एक फोकाई पे अपना एटम रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, और इस एक फोकाई पे न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को समझते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रिकल पाथ पे, एक समय इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हो रहा है, न्यूक्लियस के पास हो रहा है, और दूसरे समय इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, अपने न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है तो एक साइड में न्यूक्लियस और दूसरे साइड में हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब एक साइड में हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरे साइड में हो जा रहा है पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, फिर से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा ये चार्ज हट जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा चार्ज प्रोड्यूस होगा, फिर आएगा फिर चार्ज हट जाएगा, फिर जाएगा चार्ज प्रोड्यूस होगा। यानी कि अपना ये जो एटम था वो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल की तरह ट्रीट करेगा, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल की तरह ट्रीट करेगा। यानी वो डाइपोल में कन्वर्ट होगा, फिर डाइपोल में चला जाएगा, फिर डाइपोल में कन्वर्ट होगा, फिर डाइपोल में चला जाएगा, फिर डाइपोल में कन्वर्ट होगा, फिर डाइपोल में चला जाएगा। सिमिलरली दूसरा एटम भी ऐसा ही करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन एक बार न्यूक्लियस के पास होगा, दूसरे बार न्यूक्लियस से दूर होगा, फिर न्यूक्लियस के पास होगा, फिर न्यूक्लियस से दूर होगा, फिर न्यूक्लियस के पास होगा, फिर न्यूक्लियस से दूर होगा। जब दूसरे वाले एटम का भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के कारण, और यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण। अब जरा सा ध्यान देने वाली बात, जब ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन एटम 2 का इलेक्ट्रॉन, दिस इज एटम 2 का इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो दूसरे वाले न्यूक्लियस से क्या आ रहा है, पास आ रहा है, दूसरे वाले न्यूक्लियस के क्या आ रहा है, पास आ रहा है। ठीक है, और जब ये दूर हो जा रहा है तो ये कैसे ट्रीट कर रहा है, कैन बी ट्रीटेड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये कैसे ट्रीट कर रहा है, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो एक समय इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, फिर न्यूक्लियस के पास है, फिर न्यूक्लियस से दूर है, फिर न्यूक्लियस के पास है, फिर न्यूक्लियस से दूर है। तो जब दूर होगा तो ये कैसे ट्रीट करेगा, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, अब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, इनमें देखिए इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन हो रहा है। तो इन इंस्टेंटेनियस डाइपोल में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, यानी एटम 2 का एटम 1 के साथ एक अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, और इसी फोर्स को नाम दे दिया गया है डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। यानी दो इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स को नाम दे दिया जाएगा dispersion force or London force. The force of attraction between the two instantaneous dipole. The force of attraction between two instantaneous dipole is called dispersion force or London force. So van der Waals forces में हम लोगों ने तीन तरीके का फोर्स पढ़ा, dipole force, dipole induced dipole force, and the third one is dispersion force or London force. Thank you.